Okay, shall we start? And all the presentation we will take at in the tutorial class, or maybe one or two in this class also. That will depend how much we finish our topic. So I'm audible to you? Yes, sir. Okay. So let me just. We have to do the last detector. We have finished the scintillator. We have finished the ionization chamber, proportional counter, Geiger-Müller counter, photomultiplier, and scintillation actually. And including that, we have done the photomultiplier tube also. And we have some examples for. We have to do some examples for inorganic scintillators. Inorganic mechanism we have discussed, that is conduction band and valence band, and the electron has to go to the valence from valence band to conduction band, and then it has to backdrop to the valence band, and it will emit certain energy, means certain it will emit a photon of a certain energy, and that energy will depend from which level to which level it is doing the transition. So the most famous example, that is the example for inorganic scintillator. So inorganic scintillators examples are the mostly which is used is alkali halide. Alkali halide, most of the time. This is sodium iodide, and we have cesium iodide also, and we have cesium iodide. Cesium iodide. And in this, all the three cases, we have different impurities. We have already seen adding impurities improve our conductivity in a semiconductor. तो अगर कोई भी insulator है, semiconductor है, if you add the impurity, your conductivity increases. And what we require, हमें conductivity ही increase करना है. तो main जो motto है, so impurity is not always bad. Sometimes it is improving our properties. So normally these are the two basic alkali halide which is being used, and if it is doped with TL, I don't remember what TL is. TL must be thallium. Thallium का TL होता है, क्या होता है? And this is doped with Na. यहाँ पे जो डोपिंग है पॉसिबिलिटी है कि सीजियम को रिप्लेस करे, बट सीजियम एटम इज इन अ बिगर साइज, तो लैटिस विल डिफॉर्म मच मोर. So these are the three basic most of the time this is used. ये सस्ता भी है, economical है, cesium is quite costly, so this is quite easy to make, and the energy means the lambda or the photon which is emitted having a lambda equal to roughly 450 nanometers. 450 किस कलर को represent करता है? This is 540 and this is 420 nanometers. क्या कलर होगा ये? Anyone know which color this will be, or this one? maybe मैंने nanometers में आपके पास lambda लिखा है. So what color? Red color. Red color. Red होगा. Red 600 नहीं होता है. Violet. ब्लू के आसपास होगा. ब्लू या violet कह सकते हो. This is yellow. This is blue, or you can say violet also, and this is also similar kind of. तो कहाँ जा रहे हो? रेड तो होता है 600 से स्टार्ट होता है, 600 नैनोमीटर से रेड स्टार्ट हुआ. सो दैट इज क्वाइट अवे. 600 630 700 तक रेड जाता है. 750 या 730 के ऊपर जाओगे तो इंफ्रारेड पे चले जाते हो. And we have several more. We have also some kind of means binary system, or some like this one, barium fluoride, and that is doped with certain other things, cesium iodide, only cesium iodide. They are activated and they are not activated. So they have different lambda. वो examples में सारे लिख दूंगा. Main आपको basic ये discuss करना, उनके lambda बताने, and what are these inorganic scintillators. They are mostly they are solid. ये सारे जो हैं solid है, जो हमने पिछले organic पढ़े थे, वो mostly they are in liquid form, or some are in solid form, but mostly they are in liquid form. और जो ये वाले हैं सारे, ये आपके एक तरीके से you can say they're just like a salt.
So they are in a solid or crystal form. Now we come to the semiconductor detector. इसको भी हम फटाफट खत्म करते हैं, ये हमारे ज़्यादा मुश्किल नहीं है. Semiconductor you have already done. Semiconductor we already know. This is your semiconductor, and we will discuss only this particular structure, which is p-n junction, p and n, and this is the junction area you have. Okay, so junction area is what? क्या होता है junction area में? Immovable charges होते हैं. Means they will be in p side you will have negative, and in n side you will have positive side, and they're not moving. They are immovable charges. So and here you have all the holes. You can say these are the holes, and these are the electrons. These are electrons, and these are holes. Deficiency of electron actually. And when you do forward biasing, what you get? They can cross this junction, and obviously that is not so easy task to cross this junction. So there is because the electric field is very high, and to cross this, you require certain amount of potential. तो सिलिकॉन के लिए 0.7 के आसपास का होता है आपका एक्टिवेटेड जो वैल्यू होती है, और 0.3 होता है जर्मेनियम के लिए. बट 0.3 0.7 आर नॉट एनर्जी बैंड गैप. कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एनर्जी बैंड गैप को ही बता देते हैं कि ये हमारा वैल्यू 0.7 या 0.3. बट सिलिकॉन के लिए इट इज 0.69 1 समथिंग लाइक दैट फॉर जर्मेनियम, एंड फॉर सिलिकॉन इट इज 1.1 या 1.2 के अराउंड रफली वैल्यू होती है. नॉर्मली 1.12 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सिलिकॉन के केस में, और जर्मेनियम में 0.691 होता है. सो दे आर नॉट द नी वोल्टेज, जिसको हम नॉर्मली नी वोल्टेज कहते हैं. तो नी वोल्टेज हमारे पास सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 के अराउंड होता है, एंड जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट के अराउंड होता है, 3.2 या समथिंग लाइक दैट. कई बार 3.5 भी आ जाता है. सो दिस इज समवेयर like this one. Means this much of voltage you have to apply here, then only the conduction will start. And conduction of what? Conduction of मेजॉरिटी कैरियर. यानी जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, p और n में आपके पास होल्स और इलेक्ट्रॉन है. when they start traveling, then we say that the current has started. but even though if the voltage is less than that, अगर आपका वोल्टेज उससे कम भी है, मीन्स आप फॉरवर्ड बायस में नहीं हो, रिवर्स बायस में हो, then also you have conduction. but those conduction are due to what kind of charges? क्या होते हैं उनको, क्या कहते हैं उन चार्जेस को? Minority charge. Minority charge carrier. And minority charge carrier are not generated by any defect or any other things. Mostly they are thermally. तो उसमें domination जो है आपके thermal generation है. Means thermal generation means at room temperature you will have good amount of minority charge carriers, and their number is very good. ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम है. They are feasible to give you microampere current, or sometime it is 500 600 microampere, means 0.1 0.2 milli. So that is a very big value. So at room temperature we have good amount of minority charge carrier, and when your voltage is less than these value, they are capable of moving or crossing the junction. Obviously how they cross, that is a different issue. कि वो क्रॉस क्या करते हैं, उसमें फील्ड की वेरिएशन हमें कैसे लेनी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं. So there are so many things, but yes, still in the reverse bias also we have certain conduction. So normally if I talk about these are the knee voltage. If I talk about EG is roughly 1.1 you can say, or exactly 1 electron volt you can say easily, or for this EG is roughly 0.69 electron volt or 0.7 you can say. Semiconductor मटेरियल हम डिफाइन करते हैं बैंड गैप के अकॉर्डिंगली. हाउ वी डिफाइन? पहले रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करते थे, बट नाउ nowadays it is more when the band theory has developed, so we can distinguish the metallic system, semiconducting system, and a insulator system. So normally what we say, approximately from 1 electron volt to 4 electron volt. If your band gap means valence का जो upper level है और conduction का जो lower level है, उसके बीच का difference. If this difference is roughly of this 1 electron volt to 4 electron volt, then you say these are semiconductors. And we have semiconductor in two different form. एक को हम कहते हैं intrinsic और दूसरे को कहते हैं
extrinsic. So extrinsic is again having a two different kind of thing. This is intrinsic is something like a pure. So this is a pure silicon. You can say pure silicon or pure germanium or any other semiconductor. And extrinsic is when you have certain doping. When you do certain doping, when you add certain impurity intentionally, तो intentionally आप उसके site को disturb कर रहे हो. यानी silicon का आपके पास crystal है, so you want to remove certain number of silicon and you want to put certain other thing. So normally what we do, either silicon is a tetravalent system, so we put either a trivalent or a pentavalent system. तो हम एल्युमिनियम की डोपिंग कर सकते हैं, फास्फोरस की डोपिंग कर सकते हैं, कोई और भी जिसमें हमारे पास पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट का कैरेक्टरिस्टिक हो. मींस इलेक्ट्रॉन के केस में मैं कह रहा हूँ, दिस वैलेंट इज इलेक्ट्रॉन के केस में. सो वी गेट टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, एन टाइप and p type. And this is what we, when we attach this become a diode. So this is a semiconductor diode. So we can have n type bar also individually and we can have p type bar also individually. Okay, so these are the three different categories, and all the three different categories the conduction will be different, or you can say the number of charge carrier that will be different. Normally in intrinsic semiconductor, when you have let me write it here. In intrinsic, Ni is roughly equal to Pi, means number of electrons will be equal to number of holes, obviously, because when you are saying that the charge will be generated by either any defect which is not concerned with the dopant, but any other defect, or it is concerned with the thermal generation of these charges, means some of the electron has left a vacancy in the valence band and they have gone to the conduction band because they have got that much of energy so that they can easily cross. Obviously if you say कि सर क्रॉस कर लेंगे क्या, क्योंकि एनर्जी बैंड गैप आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और रूम टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी कितनी होती है, दैट इज वेरी लेस. इट इज वेरी लेस. So how it is possible? रूम टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी कितनी होती है? You know how much the thermal energy at room temperature? It is 0.0 something. हमने न्यूट्रॉन के केस में भी डिस्कस किया था, 0.02 या 0.0 समथिंग होता है. So that is very less, but still there is a possibility that they can cross this particular band gap which is of 1 electron volt or 1.5 or 1.2 or 0.7 or 0.6, something like that. So still they are able to cross that. So there may be certain defects, means your crystal is not so pure, not so means you can say pristine, you can say the better word is to say pristine. So that is not so pure. So some of the defects create certain number of electron, and those electron can help other electron and they can go to the conduction band. Their amount is good, means if we do the real calculation, so there will be around 10 to the power of 10 electrons, or you can say number you can say number per centimeter cube. तो roughly इस number के according हमारे पास charges होते हैं. But obviously if you convert that, you multiply with E, so this become -9, and -9 is traveling per unit time. If you can say 1 second लग रहा है आपको cross करने में junction, तो it is nano ampere. So that is not a good value. Means even though this number is good, but still it is not so much better to have a conduction. Okay, so what we do the doping. So हम क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक बना देते हैं उसे, हम उसे इम्प्योर बना देते हैं. जब इम्प्योर बनाते हैं तो हम एन टाइप बना सकते हैं. पी टाइप मींस वी कैन डू द टेट्रावेलेंट डोपिंग, सॉरी ट्राइवेलेंट डोपिंग और पेंटावेलेंट. व्हेन वी डू पेंटावेलेंट डोपिंग you get extra electron, so that is normally called as nd. You can say nd कहते हैं ना, donor, you can say donor impurity or donor atom, you can say, which you have added to this particular silicon system. The number which we feed means how much donor atom we have to put into the silicon, which is a intrinsic silicon. That will be roughly 1 atom, you can say, per 10 to the power of 6 or 7 silicon atom, or you can say germanium atom also. So up itna kam डालते, this is m. So this is 1 atom per 10 lakh or lakh of silicon atom, which is very small number.
but this number will give you a good amount of conduction. If you add more than that, means आप 2 3 4 10 डालना शुरू कर दो, तो property will deviate from ideal characteristic of a semiconductor. And if you add furthermore, then it become a conductor. So band gap आप lose कर दोगे, but you require a band gap. आप ऐसा भी नहीं चाहोगे, आप चाहोगे कि conduction increase हो but band gap भी maintained रहे. तो you don't want to do that thing कि आपने excess number of doping कर दिया, वो material आपका semiconductor छोड़ करके now it is a conducting. So that is also possible. So when you start doping, you have to dope in a some practical manner so that your band gap is maintained. Band gap में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए when you do the doping. So if you put this much of one atom per germanium, and if you know the crystal size, or you can say unit cell, or you can say the volume of your crystal, whatever, you can easily calculate. Means putting this much of atom means one atom per this silicon atom, and if you know the size of the crystal and if you know the unit cell of the silicon, then roughly the n, which is which this one, number of electron in this n type, when you do the doping of means pentavalent, so you get a e type material, means n type, जिसमें e आपका बहुत ज्यादा है, electron is excess number of electron. So if you do this kind of doping, then your roughly this order is the number of electron which is generated, which is in the conduction band, that will be roughly around 10 to the power of 17. जो हमने यहाँ पे लिखा था नंबर पर सेंटीमीटर क्यूब. तो क्या हुआ, ये तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट थे और ये भी हमने ऐड कर दिए, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग दैट हैज इंक्रीज्ड. रफली व्हेन यू डू द, इवन यू कैन डू द कैलकुलेशन, अगर आपका सिलिकॉन का वो पता है कि कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर में कितने सिलिकॉन्स होंगे, तो उसके लिए लैटिस पैरामीटर चाहिए. लैटिस पैरामीटर सिलिकॉन का रफली यू कैन इजीली डू द थिंग्स एंड गूगल कर लेना, उसमें देखना 2 और 4 के अराउंड का ये नंबर होगा उसका पिकोमीटर में, दैट इज यूनिट सेल. सो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट कि 1 सेंटीमीटर में कितने हमारे पास होंगे और अपने कितने एटम हैं सिलिकॉन में, तो you can easily calculate that will number will be around 10 to the power of 24 or something. Or for every one silicon you are putting one, for every 10 to the 10 lakh of or lakh of silicon you are putting one donor. So you can easily calculate how many electrons will be generated by putting this number of atoms as a impurity. So you can easily do the calculation. तो इतना ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं, और जब भी हम डोनर एटम बनाते हैं तो होता क्या है प्रॉब्लम कि when you have this much of, you have put x number of electrons, so what will happen, your system is having what your system is having already a intrinsic, means this is ni and pi are the intrinsic charge carrier. You are already having number of holes भी इतने हैं, number of electron भी इतने हैं, और आपने क्या किया, इतने एटम आपने उसमें एक्सेस डाल दिया जिससे आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स और जनरेट हो गए. So these electron will combine with the holes, and what will happen that ये जो इलेक्ट्रॉन थे इसमें से मान लेते हैं 10 to the power of 7 roughly. If you imagine कि 10 to the power of 7 आपके पास जो means इसको कंज्यूम करने के लिए, फॉर एग्जांपल लेट मी डू द कैलकुलेशन. तो फॉर्मूला क्या है, np at any time will be equal to nipi. this is the formula. तो फॉर्मूला में से क्या डिफाइन हो रहा है, means if you put a donor atom, then number of holes that is free to move in the valence band, that will be equal to nipi divided by n. This n is the due to this one dopant. ये भी p आपका, अगर acceptor आप डालते हो तो acceptor से p generate होगा. तो you can easily calculate, you have put this much of donor, so this much of electron has been generated, and initially this was the charge carrier. Multiplication means that is always going to be a balanced, आपका जो system है वो neutral है, तो that has to be equal to the intrinsic charge, which is number of holes and number of electrons. So you can easily calculate, and this number become 10 to the power of 3 per centimeter cube. So this is very less in comparison to electron. तो आपका जो p टाइप मटेरियल है, या सॉरी n टाइप मटेरियल है, अगर इसको हम n टाइप देख लेते हैं, तो n टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन विल बी मोर. ऐसा नहीं कि होल्स नहीं होंगे, होल्स विल बी देयर. सो लेट मी मेक इट होल्स विद ग्रीन वन. सो they will be there but very less. So you can easily say that the majority is n or majority is
electron which is carrying the current from one side to other side if you apply the electric field or potential. And holes will also move, obviously they will also contribute, but their current is very small, so that will be pico, or you can say fraction of pico chala jata hai, और ये आपका milli of maybe tens of or hundreds of micro में चला जाता है. So that is why we say this become a n type. N type का meaning ये नहीं कि सिर्फ उसमें electron ही है, उसमें holes भी हैं, but their number is very less. Okay, this is the number of electrons and this is the number of holes which are in this particular material. When you do the same thing with the Nd means Na, जैसे आपने Nd के साथ किया, Na यानी acceptor atom आपने डाल दिया. Now you put a trivalent. Trivalent डालने से क्या होगा? There will be a vacancy of a electron which is being demanding. मुझे अपना octet complete करना है, तो I have to demand an electron. I have to demand electron by nearby atom. तो nearby atom से एक silicon से वो electron pick करेगा, so that vacancy will go to the that silicon, and that silicon is again deficient, and that will try to start trying to accept the electron. And further, as the electron go on moving, the vacancy is going moving, and you can depict that hole is moving. So hole is not exactly a real thing, but actually it is inferred in the form the electron, how the vacancy is being transferred from one silicon to other silicon. तो होल, बट होल का मास भी होता है, बिकॉज वो तो कंडक्शन पे डिपेंड करता है, और ऑब्वियसली होल इज हेवियर देन इलेक्ट्रॉन और नॉट. इफ एनीवन हैज सॉलिड स्टेट थोड़ा सा पढ़ाया गया होगा, व्हिच वन इज हेवी, होल और इलेक्ट्रॉन? होल हेवी है पक्का, बट पी टाइप मटेरियल इज अ गुड, दे हैव अ गुड मोबिलिटी. जो पी टाइप होते हैं उनकी मोबिलिटी अच्छी होती है. मोबिलिटी तो आपके मास पे डिपेंड करती है कि आपका मास कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप मूव करोगे. Just try to find that whole having a mass, effective mass. I'm not talking exactly a mass, a real mass, but it is effective mass, जिसका फॉर्मूला भी होता है आपका 1/h bar और del E by del K से आप फॉर्मूला निकालते हो, वो 1/m आता है. तो दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मास. तो इफेक्टिव मास का फॉर्मूला एक बार चेक करना, and just check ki why the holes have good mobility rather than your electron. Means मुझे लग रहा है ऐसा कि शायद उल्टा होता है, बट सॉलिड स्टेट की बुक देखनी पड़ेगी अच्छे से, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट what is the mobility of holes and electron. But p type is more used for a better device rather than n type. तो जब कभी p type यूज करना होता है ना, मतलब किस डिवाइस ग्रेड का सिस्टम बनाना है, तो हम p टाइप पे ज्यादा फोकस करते हैं rather than your n type. My thought is that because the motion of electron when it is in conduction band, it is free from the nucleus, so they have only the applying field which is affecting those motion is only the applied electric field. जो आपने electric field बाहर से अप्लाई किया, वो उसी को वो affect कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है. बट जब वो वैलेंस बैंड में मूव कर रहा है, बिकॉज होल है टू होल्स को मूव करना है, होल्स को मूव करना है, so it has to do in the valence band only, and the valence band is near to the nucleus, means electron will be pulled faster from one silicon atom to other silicon atom, because all the nucleus are positive charge, and if the electron is there, and that can also means that can also put the some kind of resistance कि एक silicon atom उसको बड़े strongly electron को pull कर रहा है, दूसरा demand कर रहा है, तो it can have a hindrance in moving also. तो just go through it what I have said you, कि एक बार जरा solid state की book देखना, और solid state की book में दोनों की mobility ढूंढ के देख लेना कि क्या फर्क है. मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कि कहीं होल का कम होता है, बट ऑब्वियसली होल कैन हैव द हिंड्रेंस आल्सो. भी एक सिलिकॉन से दूसरे वाली सिलिकॉन पे इजीली जंप नहीं हो सकता है, बिकॉज वो सिलिकॉन भी उसे अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा भी उसे अट्रैक्ट करना चाहता है. इट हैज टू टेक, इट हैज टू अप्लाई सर्टेन फोर्स. तो एक बार से चेक करना कि ये जो मोशन है, हाउ दे आर वेरिंग इन बोथ द केसेस. So not going into much detail, so just defining the mobility of hole and mobility of electron. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मोबिलिटी का? VE, the velocity, or you can say drift velocity, not the velocity, but drift velocity to the applied electric field. And similarly, you have drift velocity of holes to the applied electric field. So this is the mobility formula. Mobility is very important. आपका mobility ही decide करता है
कि आपका सिस्टम कितना फास्ट है कितना स्लो है. बिकॉज mobility is how mobile you are, how easily you can flow in the system. So whichever device is having a good mobility, they will provide you a good response time. भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में उसे बहुत कम टाइम लगेगा. So that is a faster device. So in most of the cases when we go for the transistor के केस में जाते हैं, अगर ट्रांजिस्टर ये सारा सिस्टम जो है they are semi electronic kind of thing. So if you go with the BJT, which is bipolar junction transistor, which is made up of PNN type material, उससे बेटर इम्प्योरिटी आप सॉरी बेटर मोबिलिटी आपकी आ जाती है फेट में. फेट से भी थोड़ी और बेटर आ जाती है मॉसफेट में. एज यू गो ऑन मूविंग योर मोबिलिटी इंक्रीजेस. मींस डिवाइस टू डिवाइस ग्रेड में भी डिफर करता है. और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सिलिकॉन या जर्मेनियम में बेटर मोबिलिटी होती है. आई थिंक इट इज नंबर इज अराउंड 400 और 300 और 200 समथिंग लाइक दैट. उससे ज्यादा नहीं. इवन आप क्वेश्चंस को ये करते होगे तो मोबिलिटी का यूनिट जो निकलेगा दैट विल बी योर मीटर पर सेकेंड हो गया, एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज वोल्ट पर मीटर. सो पर मीटर मीन्स डिवाइडेड बाय एम आ गया आपके पास. तो दिस विल बी समथिंग विच इज वोल्ट पर सेकेंड हो गया if I am correct. Meter per second is the velocity, and electric field is this and plus this one. It must be electric field का तो ये है ना वोल्ट पर मीटर है. तो वोल्ट पर मीटर will be volt inverse and meter plus. So meter plus will be meter 2 and volt inverse means this will be something like this, m2 and s inverse and v inverse. So this much this value is roughly around 100 or maximum to maximum 400 से ज्यादा नहीं. So अब इसको रियलिटी में क्या इमेजिन करोगे आई डोंट नो कि व्हाट दिस नंबर इज सेइंग टू यू कि 1 वोल्ट अप्लाई किया तो उसका इतना मीटर पर सेकंड से या इतना डिस्टेंस वो इजीली ट्रैवल कर सकता है विद इन 1 सेकंड. दैट विद इन एरिया यू कैन से कि एक एरिया को कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा. बट कुछ डिवाइस जो बेटर होते हैं मींस मे बी मोर बेटर एंड समथिंग लाइक इम्प्रूव्ड, बट उनकी रीजन क्या आता है उसमें बैंड गैप डिक्रीज हो जाता है. व्हेन यू ट्राई टू इंक्रीज द मोबिलिटी, फॉर एग्जांपल मेटल की मोबिलिटी बहुत अच्छी है. विदाउट एनी टाइम द थिंग्स विल ट्रैवल, बट देयर इज नो बैंड गैप डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो जब भी आप मोबिलिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो तो यू डिक्रीज द बैंड गैप, बट बैंड गैप इज रिक्वायर्ड. बैंड गैप अगर खत्म हो गया तो हमारा काम ही खत्म हो गया. अभी उसका जो प्रोसेस है, how we use the PN junction to detect radiation, that we will discuss, and why the band gap is very important. अगर बैंड गैप रिमूव हो गया तो हमारे पास कोई डिटेक्शन ही नहीं होगा. मोबिलिटी तो इंक्रीज हो जाएगी, द मटेरियल विल बिकम कंडक्टिंग, इट इज वेरी फास्ट. और सुपर कंडक्टर की अगर देखोगे, सुपर कंडक्टर का सबसे फास्ट है. दे डोंट फील एनी रेजिस्टेंस, बट व्हाट इज द बैंड गैप? दे हैव फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 0.03 के आसपास के इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसमें बैंड गैप होता है. दैट बैंड गैप इज वेरी स्मॉल, दैट इज वेरी स्मॉल. सो अभी पढ़ोगे सुपर कंडक्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें देखोगे सुपर कंडक्टर तो बिल्कुल कंडक्टिंग है, उसमें तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, बट इट हैज अ बैंड गैप. इट इज नॉट एट ऑल अ कंडक्टर, इट हैज अ बैंड गैप. तो देखना, उसे पढ़ना, यू विल एंजॉय कि वो व्हाई द सुपर कंडक्टर हैव अ बैंड गैप एंड हाउ दे आर वर्किंग, मींस उनका जो प्रोसेस है वो कैसे होता है. स्टिल दे हैव जीरो रेजिस्टेंस. ओके, सो व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस? मींस ये तो सारी कहानी होगी कि इसका मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, उसके चार्ज कैरियर क्या होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है. ऑल these things you already know. So what we require is how we can utilize this one to detect any radiation. अब रेडिएशन का डिटेक्शन का प्रोसेस वही है जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं. Means radiation will come, enter into your material or enter into your detector, and after entering it will generate electron and ion pair. But semiconductor के केस में it will generate electron and hole pair. जो नॉर्मल गैस सिस्टम में था हमारे पास इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जनरेट हुए. Scintillator में हमारे पास that has been converted into a light form, and in third case which is solid state, it has been electron and holes pair are generated. बट कहाँ पे जनरेट होते हैं? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन व्हाट रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन और डायोड, देन यू गेट अ
इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेशन। कहाँ पे फॉल होते हैं ये और कहाँ पे जनरेट होते हैं? एन टाइप में, पी टाइप में, या किस कैटेगरी में जनरेट होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमें एक्स्ट्रा जनरेट करने हैं क्योंकि रेडिएशन हैज टू कम, एंड this is your, let me just make it, this is your p type and this is your n type. तो क्या बाइसिंग होगी जिसमें कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं? रिकम्बाइन नहीं करना है, हमें जनरेट करना है। एंड लेट मी जस्ट ड्रॉ द junction area also. This is your positive area and this side is your negative area. कहाँ पे होते हैं? ये हमारा पीएन जंक्शन का डायोड बन गया। दो अलग अलग मटेरियल है, दोनों को हमने ज्वाइन किया, and this is your junction area. This junction area is quite large. This is of a size say x1, and let me make it this size as x2. And here you have doped with nd and here you have doped with na. ये डोपेंट की बात कर रहा हूं मैं। Obviously there will be holes when you do the doping, and in this case you have electrons. So what kind of biasing I should do where the electron hole pair get generated at certain region and I can collect them? This is what I have to do. हमें होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर को कलेक्ट करना है, जैसे हमने पिछले केस में किया गैस वाले में। सर रिवर्स बाइसिंग। एक सेकंड, मे बी आई हैव, ओके दिस इज अ डायग्राम। मेरे ख्याल से आपको डायग्राम, दिस इज द डायग्राम। p type, n type, these are holes, this is na, these are electrons, this is nd you have doped, and this is a junction area, and junction area has certain width. If your dopant is equivalent number, then the width will be something which is equal. If the dopant have different numbers, then this width will be a different value. So where the electron and hole pair will generate if the radiation falls? कहाँ पे जनरेट होंगे? सर रिवर्स बाइस में करते हैं तो डिप्लीशन रीजन डिप्लीशन रीजन में कोई भी, आप फोटो डायोड आपने पढ़ा होगा, आपने सोलर सेल भी पढ़ा हुआ है। तो इन सारे केसेस में जो भी आपके फोटो डायोड, सोलर सेल और इसके जो अपोजिट सेंस है वो एलईडी है। एलईडी में आपके पास रिकॉम्बिनेशन होता है, सोलर सेल और उसमें आपके रीजनरेशन होते हैं। तो if the radiation comes, means if your radiation is entering, let me make it with blue one. So if the radiation enter into p type, it is not going to do anything. If the radiation enter into n type material, it is not going to do anything. You won't able to get anything. But if a radiation falls in this region, your junction area, means the junction area should be exposed to the radiation. So if it falls here, it will generate electron and hole pair along its path. But obviously the chance will be recombination is the first chance. भाई इनके पास chance होगा कि recombine कर जाए. But what you can do, you can apply a good amount of electric field in a reverse bias. If you apply a good amount of electric field in a reverse bias, then these pairs which has been generated in the junction area, they can easily be pulled out. आपके ये होल्स और इलेक्ट्रॉन का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, ये वही है, इनको वहीं रहने दो। But if somehow these are created and if you apply a good amount of electric field, these electrons will enter into this region. And when they enter into this region, they find excess of electrons, so they easily getting collected to the battery.
Similarly, the holes will get collected to the battery. And obviously this is a opposite sense of current. The current will be in this direction, IE, and this is IH. So it is from N to P. So this is a reverse current, means you are discussing or you are using this region, fourth quadrant का region आप use कर रहे हो. This is V, sorry, this is I and this is V. So एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, ब्रेकडाउन के वोल्टेज के बाद आपका सडनली इंक्रीज होता है अप टू ब्रेकडाउन वोल्टेज, जस्ट डूइंग अ नॉर्मल कलेक्शन ऑफ दीज थिंग्स. तो आपको रिवर्स बायस में आपका कलेक्शन करना होता है इसको, जो आपका बायसिंग है आपका डायोड का, उसको रिवर्स बायस में रखना होता है. रफली द वोल्टेज इज अराउंड 10,000 to 3,000 volt. You don't use this volt in लैब में आपको हार्डली 10 वोल्ट 20 वोल्ट ज्यादा से ज्यादा 100 वोल्ट यूज कर लोगे. जीना डायोड है तो आपके पास 50-100 वोल्ट तक यूज कर सकते हो, बट दिस इज नॉट अ feasible voltage in a lab. So this is a very good amount of. And what happens when you in the reverse bias, if you increase the voltage, what will happen to the depletion layer? Depletion region को क्या होगा, increase होगा decrease होगा? अगर आप इतना वोल्टेज अप्लाई, हाँ फिर से बोलो, इंक्रीज होगा. क्या होगा, जैसे आपने वोल्टेज अप्लाई किया, अगर कोई रेडिएशन नहीं है तो सबसे पहले वोल्टेज किसकी डिमांड करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको पुल आउट करेगा. एंड एज इट गोज ऑन पुलिंग आउट दीज इलेक्ट्रॉन्स, द रीजन इज गोइंग टू इंक्रीज. तो ये आपका थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा, मींस यू विल गेट मोर डिप्लीशन रीजन, दैट रीजन गोइंग टू इंक्रीज. And as your depletion region is going to increase, you have good amount of chance to generate electron and hole pair. आपका रेडिएशन ज्यादा पाथ कवर करेगा डिप्लीशन रीजन में. So this is the what basic idea is कि आप डायोड लीजिए, make it in reverse bias and apply a good amount of, obviously the diode should sustain this voltage also. आपका जो डायोड है इस वोल्टेज को सस्टेन करना चाहिए उसे. तो रूम टेम्परेचर पे दिस इज नॉट पॉसिबल. It is not possible at room temperature, but if you decrease the temperature, this is possible. Why it is possible? Because if you at a room temperature you have a minority charge carrier, and if you apply this much of voltage, these minority charge carriers, means electrons, will gain certain good amount of energy that they are capable of doing avalanche. वो क्या करेंगे, आपके में होंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि रिवर्स बायस में वही वर्क करेंगे. तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल डू व्हाट, दे विल start moving with higher velocity because you have applied a good amount of electric field. आपने 3000 या 3000 या 1000 वोल्ट लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज डायोड साइज इज हार्डली अ मिलीमीटर, और मिलीमीटर में भी डिप्लीशन रीजन देखोगे तो इट इज अ माइक्रो. So that is a very small distance, you are applying a good amount of potential, so that will have a good amount of electric field, and when the charges is moving they can gain energy, obviously they are going to accelerate, so they can start rupturing your other sites in your PN junction, so they can do the avalanche, they can generally shoot up the charges. क्या करेंगे, मूव करते हुए शूट अप कर देंगे. तो what you can do, that you want to decrease the minority charge carrier, that should be very less. So what we do, we keep the system in a very low temperature, normally in a liquid nitrogen. तो आप ये सारा सिस्टम जो रखते हो ना एक बॉक्स में होता है, और उस बॉक्स में भी आपके पास वो जो आपका कंडक्ट डायोड है या जो भी आपने डिटेक्टर का डिजाइन बनाया है, वो आप you keep it at roughly 77 K. At this temperature you have very less number of minority charge carrier, so you don't have any avalanche kind of condition. Obviously silicon में हो सकता है, but germanium में और decrease हो जाता है. तो germanium is more used as a solid state detector for radiation rather than silicon, but you have to maintain this kind of temperature. So when you maintain this kind of temperature, your depletion region increases, and when the region increases, means this particular area or this particular volume which is increased, when this increase, you have good amount of chance that your radiation can generate good number of electron and hole pair, and when they are collected at this battery, you can measure the current, and that current will be a good value, means feasible measurable value, otherwise it is very small value. So let me just read out two statements that why we require such a large value of voltage, that it increases the magnitude of electric field in the depletion region, making charge collection more efficient. आपका charge collection भी easy हो जाता है. It increases the dimension of depletion region, which increases the sensitivity
सेंसिटिव वॉल्यूम ऑफ द डिटेक्टर। डिटेक्टर का जो सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे आपका एक्चुअली जो कन्वर्जन हो रहा है आपके जो रेडिएशन का एनर्जी है E, that has been converted into, again that is the same formula you have to use. E is the energy of say radiation, जो आपका इनकमिंग रेडिएशन अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, या कोई आपका फोटोन भी हो सकता है, that is gamma. So that will generate means that will be divided by Eg. Eg is the band gap energy, and when you divide that you will get the number of electron and hole pair. तो जब इस रेडिएशन को आप Eg से डिवाइड करते हो, यानी Eg इज द बैंड गैप, बिकॉज इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट होंगे दे विल जनरेट इन द फॉर्म ऑफ बैंड गैप ओनली। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन आपका जो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड में, यू हैव टू मेक इट आउट टू द कंडक्शन बैंड, सो दैट दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेटेड। सो यू हैव टू डिवाइड विद Eg एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट। तो रफली मान लेते हैं कि हमारा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आपका जो बैंड गैप है, बैंड गैप आपका 0.7 yeah, something, let us say 0.7 electron volt. So you can easily see what this number is. Number is around 10 into 10 to the power of 6 and 1 by 7. 1 by 7 कितना होगा? इसको 7 क्या 1 ही रख लो, छोड़ो इसको 7 भी मत रखो, 1 रखो, 1 electron volt रख लेते हैं. We will keep 1 mega electron volts. So this will be roughly a 10 to the power of 6 electron and hole pair. So that is a good value. That is not bad value. ये उतनी ही वैल्यू है जितना आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनर से आप डालते थे ना, तो रफली उसी के आसपास की वैल्यू है. सो यू कैन इजीली कलेक्ट दिस एंड यू कैन फर्दर इंप्रूव दैट आल्सो. अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है, आप और लो टेम्परेचर पे चलेंगे तो दैट विल इंप्रूव, मींस योर सेंसिटिविटी विल इंप्रूव. सो दैट इज व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस मच ऑफ वैल्यू. इसके दो इफेक्ट हैं. एक तो कलेक्शन इजी है, जब भी ये जनरेट होगा दे विल नेवर रिकम्बाइन, उसके चांसेस बहुत ही कम है, रिकम्बाइन नहीं होगा. दे विल जस्ट गेट कलेक्टेड बिकॉज दिस पोटेंशियल इज वेरी हाई, सो दे विल गेट कलेक्टेड एट द बैटरी. And the second what benefit we are getting, that we are also increasing the size of or volume of this particular sensitive area within this one. So this is what the mechanism of a this silicon or semiconductor or germanium semiconductor diode. And there is one formula I just give you, maybe you have derived in your मेरे ख्याल से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एक क्लास होती थी, मतलब सिलेबस में होता था. अब वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो उसमें कई सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में कहीं डेरिवेशन किया आपने, या वो शायद खत्म हो गया. सेमीकंडक्टर को लेकर के उसका जंक्शन हाइट हो गया, उसका विड्थ हो गया, ये सब कैलकुलेशन किया आपने थ्योरेटिकली? हैव यू एवर डन दिस? नहीं. फॉर्मूला पढ़ा सर, वो भी है. बोलो. नहीं सर, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पहले होता था, 3 ईयर प्लान होता था ना इनका, 3 ईयर का कोर्स था, तब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें सारी डेरिवेशन करनी होती थी. तो आई जस्ट गिव यू द नंबर दैट द डिप्लीशन साइज मींस दिस, लेट मी राइट इन x2 फॉर्म. x2 is a region where you have nd much greater than na, यानी ये वाला रीजन है ना जिसमें आपका nd ज्यादा है Na के रिस्पेक्ट में, यानी आपने डोनर एटम जहां डाला है. तो इस रीजन में जो साइज है इस डिप्लीशन रीजन का, दैट इज इक्वल टू, यानी x2 की वैल्यू जो होती है दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट v अप्लाइड पोटेंशियल. एप्सिलॉन नॉट आपका वही है परमिटिविटी, एंड 2 एंड डिवाइडेड बाय Na, क्योंकि जंक्शन आप बना रहे हो तो Na की रिक्वायरमेंट होगी आपको. सो दिस इज रफली इक्वल टू दिस वन. वैसे तो फॉर्मूला Na नहीं होता है, Na into 1 plus nd, sorry, Na by nd होता है, तो ये ज्यादा बड़ा होता है, मींस nd is much greater than this one. This number reduces and 1 से मल्टीप्लाई के ये आ जाता है. Similarly, x1 will be roughly equal to 2 epsilon naught v divided by end, because here Na is much greater than nd. So the total width x, you can say x1 plus x2, that will be sum of these two numbers. तो ये विड्थ साइज देखो वोल्टेज पे प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली. अगर बाकी नंबर आपके कांस्टेंट है, यानी आपने कितने डोपेंट डाले हैं, दैट यू नो, चार्ज आपको पता ही है, ई चेंज नहीं कर सकते, ये एप्सिलॉन चेंज नहीं कर सकते, ई चेंज नहीं करते, 2 इज ऑलरेडी देयर. एनडी आपने जो मटेरियल बना दिया है,
only the chance is to increase the voltage. So voltage आप increase कर दो, size is going to increase. So this is what you can do the calculation कि 3000 पे अगर एक real में number ले लेता हूँ कि 1 dopant मैंने 1 lakh silicon पे डाला है, तो मेरा x1 की value क्या होगी? That will be something which is 100 of micrometer. So that is good amount of size. Normally ये micrometers में होते हैं, fraction of micrometer में होते हैं, but if you increase the voltage 3 means रफली 3 ऑर्डर का हो गया ना, 1 या 30 वोल्ट का अराउंड 100 ऑर्डर का हो, तो 100 ऑर्डर का मेरा साइज भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो द एग्जांपल्स, नाउ वी विल डू द एग्जांपल. ये तो हो गया, प्रोसेस हो गया. नाउ वी डू द एग्जांपल. एग्जांपल इज देयर आर टू डिफरेंट famous material which is used is jelly and silly. So they have two different semiconductor which are used, and normally in most of the detector we have these two different things, but we don't know what is jelly and we don't know what is silly. jelly silly कोई word सुना है हमने semiconductor फॉर्म में? मैंने तो नहीं सुना. What they are? So they are nothing but this is actually germanium doped with lithium, and this is silicon doped with lithium. So the name is fancy. तो पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में नेम फैंसी रखने का एक ट्रेंड है. तो बड़ा ही नेम अजीब है. वैसे जी से होना चाहिए, बट वी नॉर्मली जेली, वी नो द जेली व्हाट इज, तो जेली नाम रखा गया है इसको. इट इज जर्मेनियम डोप्ड विथ लिथियम, एंड सिमिलरली वी हैव सिलिकॉन व्हिच इज डोप्ड विथ लिथियम. तो सिलिकॉन डोप्ड विथ लिथियम इज सेली, एंड सिली कहते हैं वैसे, जेली एंड सिली. सो दीज आर द टू फेमस you can say semiconductor diode or solid state. इसको solid state detector भी कहते हैं कई बार, solid state. So these are solid state detector. And what the improvement which is being done means, बाकी detailing में नहीं जा रहा हूँ उतना कि क्या फर्क है क्या नहीं है, but what the actual picture we have means, the sample is roughly something like this one, because we need to have a PN junction. हमारे पास क्या होना चाहिए? पीएन जंक्शन होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, पी टाइप मटेरियल लेते हैं, ठीक है, और पी टाइप मटेरियल में वी डू वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एन टाइप. हम क्या करते हैं, पी टाइप मटेरियल लिया हमने पूरा का पूरा, और उसमें एक्सेस नंबर ऑफ लिथियम हमने सिर्फ सरफेस पे डाल दिया. सो दैट ऊपर का बिल्कुल वेरी थिन लेयर, that become n type, and this is p type is a very large substrate. This is a big substrate. So roughly this total size is 2 centimeter, and this size, only this one you can say, let me just make it in this way, this size is roughly 1 millimeter. तो 2 सेंटीमीटर के पूरे सबस्ट्रेट पे हमने क्या किया, ऊपर के सरफेस पे स्मॉल अमाउंट ऑफ लिथियम हमने डाल दिया. तो दैट बिकम अ रफली n kind of, means away from p type it become n type. तो away from p type you can say, जिसको कई बार हम p प्लस या n प्लस के फॉर्म में भी लिखते हैं, बट उतने डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं. सो दिस इज, सो व्हाट हैपेंस, जब रेडिएशन एंटर करेगा तो रेडिएशन विल क्रॉस दिस पर्टिकुलर थिंग्स. मींस 1 मिलीमीटर हमने पहले भी देखा है कि अल्फा के लिए मुश्किल है, अल्फा का जो रेंज है, रेंज ही 1 मिलीमीटर होता है. So this kind of system cannot be used for alpha particle, but can be used for beta and gamma particle. तो बीटा और गामा के लिए वो 1 मिलीमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं, they can easily cross that. वो सेंटीमीटर या मोर देन सेंटीमीटर क्रॉस कर जाते हैं. So they can easily go to the अब जंक्शन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि there is a small n material and there is a big p type. So mostly the junction will be formed in this region. So the radiation is going to enter in this one. Now we have also reduced this size because we need to have more thinner n type. So with the improvement of pure silicon or pure germanium extraction, now the size has of this n type का जो size है, roughly that become around 1 or fraction of micrometer, which is very small, which is hardly a, means you cannot imagine this number. इतने ही साइज का रह गया है, and these are used to detect alpha particle also. But solid state detector के बहुत सारे benefit भी हैं. डिजाइन में डिटेल में शेयर कर दूंगा what is the design and how much size is of these particular material, but roughly this is the picture we have.
very small, very means if you have p type substrate, you just dope a small amount of lithium on the top and that become n type. And when you do when you have n type, you have to do with the other thing also. तो आप n type भी select कर सकते हो और उसमें p type की doping कर सकते हो टॉप पे, but normally मैंने पहले भी कहा था कि p type is more used when you have a device grade and if you want to have a good efficiency, तो आपको p type material ही use करना पड़ता है. तो p type maximum time use होता है, small amount of n time which is something like an impurity, and this is the junction area you are getting. So what are the advantage of solid state detector? They are more efficient and they are high sensitive, means sensitivity is very high, more denser and compact. आपका डेंसिटी भी ज्यादा है गैस के रिस्पेक्ट में या लिक्विड के रिस्पेक्ट में, तो डेंसर एंड कॉम्पैक्ट. And linearity is good for a over a wide range. Means linearity means this formula which we are already discussing. This formula, this should be linear, means how much number of electron and hole pair will be generated, that will be directly proportional to your number energy of the incoming radiation. So linearity maintained hona chahiye. So solid state detector या semiconductor give a good linearity in a very wide range. Means fraction of mega electron volt से लेकर के वो 10 और 15 mega electron volt या 20 तक they give a linear picture. That is not so in the case of gas or any other detector. So these are the advantage. Normally advantage लिखने को आता है, तो advantage मैं notes में भी आपको provide कर दूंगा. बार बार मैं notes कह रहा हूँ कि provide करूंगा, ये मुझे दोनों यूनिट के नोट्स बनाने पड़े हैं, बनाने में भी टाइम लगेगा, बनाना भी है, शेयर भी करना है. तो मैं इस जो अगला वीक है उसमें सेमेस्टर ब्रेक है, so you can enjoy your break and I will make the notes and then I will provide the notes. So now we will move to the particle physics from the next class, and anyone whose name is there for the presentation for this particular time, means इसके लिए मैंने 2 बच्चों का नाम होगा आज के दिन के लिए जो थ्योरी क्लास में देंगे. So if you remember, otherwise I have to see the shared file that whose name is there. If you remember, just start your presentation. तो 2 बच्चे अभी दे दो और बाकी जो 6 बच्चे बचे हैं, और 6 क्या एक साथ भी बच्चे होंगे, 7 या 8 होंगे, they will give in the tutorial class. So we will try to finish the. और जिन बच्चों का नेक्स्ट वीक है, मींस आपके सेमेस्टर ब्रेक में है, जिन बच्चों का शायद 7-8 बच्चे होंगे, तो they will give in those time only. I will start the meeting and if you are ready, you just give to me. जरूरी नहीं कि सारी क्लास ज्वाइन करेगी क्योंकि आपकी छुट्टी है, बट आप घर पे ही बैठे हो तो आप दे सकते हो 10-15 मिनट का प्रेजेंटेशन. मंडे भी होगा और ट्यूसडे भी होगा और सैटरडे भी होगा, एज यूजुअल टाइम पे होगा. मंडे को आप 1 बजे दे दो, 2 बजे दे दो, 3 बजे, तीनों 2 घंटे में से कभी भी दे दो, ठीक है. तो जिन बच्चों का नेक्स्ट वीक है वो नेक्स्ट वीक ही होगा प्रेजेंटेशन, और जिनका आज है वो अभी से स्टार्ट हो जाएंगे. तो मैं जरा देखूं कि कौन है और प्रेजेंटर किसको बनाना है. And please stick to your timings so that your marks is not deducted. डिडक्ट वाला, वो डिडक्टेड वाला नहीं, डिडक्ट वाला. डिडक्ट मीन्स जो डिडक्ट होता है, ड वाला है, ठीक है. तो डिडक्ट नो मार्क्स, इसके लिए ध्यान रखना. कौन है अभी इसके लिए, आज के लिए कौन था? आई हैव टू सी द लॉग, मैं देखूं. तो आज की डेट क्या है? आज की डेट है 10, सॉरी 9. तो 9th को किसका था? ओके सचिन, यू आपको देना है. यस सर. तो बनाता हूँ सर राधिका पारी को भी देना है. राधिका पारी. अच्छा, ये इसी वाले में देना है, मतलब थ्योरी क्लास में ही? यस सर. ओके, तो दोनों को मैंने बना दिया है. यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन. फिर ट्यूट क्लास वाले भी होंगे 2 बच्चे, और बाकी जो मंडे और ट्यूसडे वाले रह गए उन बच्चों को भी देना है. लेट मी सी द लॉग आल्सो. And today in doubt class you have RC circuit will be discussed by Amit Sehgal sir. तो अमित सहगल सर का सुन लेना लेक्चर थोड़ा. अगर आरसी सर्किट आपको बहुत अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है, और फिर भी अगर आपको लगता है कि शायद कुछ अच्छा हो तो यू कैन go there and listen to sir.
ही इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, तो वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे फिजिक्स वालों से। चलो, लीनियर एक्सीलरेटर मुझे दिख रहा है, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। Sir, may I start with the presentation? Yes, you can start.